Hello. Hello everyone. Am I audible to you guys? Yeah, you are audible. Okay, okay, great. So I guess काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, काफी लोग लीव भी कर रहे चक्कर में बिकॉज मीटिंग हैजंट स्टार्टेड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम स्टार्ट कर दे सेशन एंड जिनको बाद में ज्वाइन करना होगा दे माइट ज्वाइन लेटर एज वेल, राइट? सो अब हम किक ऑफ कर देते हैं. ओके, नो मोर फॉर द वेटिंग. ओके, ओके हितांशी मैम, इफ इट्स नॉट इशू टू यू. No, no, it's all good. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैम. All right. Am I audible to everyone? Yeah, you are audible. Okay. So, good evening, everyone present here. I think we have our deputy speaker also with us, and we have Hardik with us as well. So, I am Hitanshi. I'll be your speaker for the committee for the 2 days. This session has been set up by the organizing committee so that it acts like an ice breaking session for you all, also so that you can clear out your doubts if you have any, or any other inquiry that you people have regarding the conference or the agenda or anything related to the committee. So does anybody have any questions, any doubts? Can you please tell the rules of the Lok Sabha, which, what I'm trying to ask is in what tone we can speak and which words we should not use, you know? Okay, so see, the Lok Sabha as a committee is not very different than an actual Lok Sabha. It's just a academic setup of the actual Lok Sabha that we will be simulating upon. So, like in an actual Lok Sabha, if anyone of you have seen the working and functioning of an actual Lok Sabha, maybe because now even during the pandemic and even before that, it used to be telecasted on the TV as well. So you must have seen there's normally a speaker sitting there, and there are the parliamentarians over there from the ruling opposition and others, and they normally discuss matters of national importance. So the only minute difference that there will be in our academic simulation and the actual Lok Sabha is that over there, even though the rules are there, but the rules are not very, strictly followed. However, in our academic simulation, the rules will be followed as per the the rules and procedures that are there for the academic simulation of the Lok Sabha. And like for instance, over here we'll have a proper systematic approach to the debate we'll be having over the period of 2 days. Like we'll Excuse be me, having ma'am. yes. हितांशी मैम, मैम आप हंसराज में भी थी ना? Yes. मैं आपकी कमेटी में था. ठीक है, ओके, ऑल राइट. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू. सो यहाँ पर अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? शुड आई जस्ट यूज इंग्लिश या फिर हिंदी यूज करूं? लाइक इफ Yeah, you can use both. okay, fine. So यहाँ पर we'll be having a proper systematic debate over the period of 2 days. Like we'll be beginning with proper opening statements. The time for the opening statements will be decided in the committee itself. Normally it is 90 seconds. Obviously, I'm sure that you people must have been to other committees as well. So this is one major issue that I face, that people come to me in committees and say that कि मैम हमने जब दूसरी कमिटी में गए थे तब तो हमने वहाँ ऐसा नहीं करा था, यहाँ पर हम कुछ और कर रहे हैं. See, definitely you people must be having different experiences in different committees, because different executive boards have a very individualistic approach. However, the जैसे मोटे मोटे जो rules होते हैं वो same रहते हैं, but still the executive board members have an individualistic approach to the procedure that they follow and how they conduct the proceedings over the period of 2 days. So normally when we talk about opening statements, that will be the first by default speech that you people will be making. Is normally it's of 90 seconds. Some in some committees it's of 60 seconds as well, but I prefer 90 seconds as the time limit, because 60 seconds is like शुरू होते ही कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता. तो 90 seconds is for the convenience of the delegates itself.
Now coming to as I think Nitya asked कि हम लोग किस तरह का language use कर सकते हैं. See, in my committee you can go for both English and Hindi, but the only restriction is that if you are making a speech in English, restrict to English. If you are making a speech in Hindi, then restrict to Hindi. ऐसा नहीं हो कि आप start English में कर रहे हैं और खत्म करते 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 आप हिंदी में आ जा रहे एक्सक्यूज हैं. मी मैम, हाँ जी, बताइए. बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 22 भाषाएं हैं जो उसको रिकॉग्नाइज किया गया है. आई बिलोंग टू पंजाब, तो क्या मैं पंजाबी में स्पीच नहीं दे सकता? सर देखिए, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है वो ठीक है, बट हम लोग जब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज डिफरेंट ही रहती है. एंड मैंने आपको वही कहा, देखिए आप एक्चुअल लोकसभा की भी अगर प्रोसीडिंग्स देखते हैं, क्या आप एक्चुअल लोकसभा में ये देखते हैं कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन है जो पंजाब से है, क्या वो पंजाबी में स्पीच देते हैं? नहीं देते ऑफ कोर्स, बिकॉज आपका एक ऑफिशियल नहीं लैंग्वेज का भी देते हैं मैम. I have seen many MP belonging to their respective constituency and their regional languages they represented there. Ma'am, I want portfolio representation. That is why मैं अपना वो उस तरह का कपड़ा भी पहन के आऊंगा. नहीं सर, देखिए द पर्पस ऑफ गिविंग अ स्पीच इज दैट कि आपके जो फेलो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो आपके स्पीकर हैं, वो आपकी स्पीच को अंडरस्टैंड कर पाए. तो क्या आप मेरे को ये चीज अश्योर कर पाएंगे कि अगर आप अपनी स्पीच सपोजली पंजाबी में देते हैं, या फिर अगर कोई और डेलीगेट आकर मुझे कहता है मैं अपनी स्पीच सिंधी या कोई और लैंग्वेज में देना चाहता हूँ जो कि गिवन है वहां पर, तो क्या आप मुझे अश्योर कर पाएंगे कि अगर आपकी कमिटी में आपके साथ 29 या 30 या 40 डेलीगेट्स और हैं, और अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 3 एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स हैं, क्या वो सबके सब आपकी स्पीच समझ पाएंगे? तो जो पर्पस है आपकी स्पीच देने का, Ma'am, just a special request because you know language is very near to my heart. एंड दैट इज वाई मैम स्पेशल रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि ये जो है वो हमें हमारे कॉलेज के तरफ से भेजा गया है. एंड आप जानते हैं कि पंजाब में पंजाबियत बहुत हावी होती है, इसलिए मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पंजाबी में बोलने दिया जाए और मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट खुद कर दूंगा. बाकी जो दूसरे डेलीगेट तो होता नहीं है वैसे इंडियन कमेटी में मेंबर्स होंगे या पार्लियामेंटेरियन, तो मैं उनको समझा के लिए वो कर दूंगा. नहीं सर, देखिए आपकी जो रिक्वेस्ट है, मैं पर्सनली आपके सारे स्पीचेस के लिए आपका रिक्वेस्ट ही ग्रांट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देखिए आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आप स्पीच ही पंजाबी में देना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे भी पंजाबी पूरा नहीं समझ में आती है. और कमिटी में जो बाकी डेलीगेट्स हैं, आई एम श्योर उनमें से हर कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पंजाबी 100% समझ में आती है, राइट? तो आप भले आप पंजाब के पार्लियामेंटेरियन हैं, ठीक है, आप जब पंजाब के अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं आप वहां पर यूज कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर सिटिंग इन अ लोकसभा, देन ऑफिशियल लैंग्वेज एक अलग चीज होती है, एंड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो एक अलग चीज होती है. सो इफ यू आर इन माई कमिटी, देन इंग्लिश और हिंदी इज द लैंग्वेज दैट यू हैव टू फॉलो. बोथ ऑफ देम ऑफ कोर्स विल बी एनकरेज. आप हिंदी यूज करना चाहते हैं हिंदी करिए, इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश करिए. हाँ, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा लाइन है या फिर पर्टिकुलर कोई ऐसा आप कोट यूज कर रहे हैं वो आप पंजाबी में बोलना चाहते हैं, तो आप वो डेफिनेटली बोल सकते हैं, बट एज फार एज द एंटायर स्पीच गोज, यू कैन नॉट गिव दैट इन पंजाबी लैंग्वेज. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay. Yes, and as Nitya asked about the language, Nitya, have I cleared your question? Yes, ma'am. Okay. Anybody else? Please feel free to ask any question. Ma'am, could you please explain how to do the research? Okay. So over here, does everybody know the agenda of the committee? Yes. Okay. Yes, ma'am. So the agenda of our committee is just for those in case anybody is not aware of it. It is deliberation on the issue of women's safety with special emphasis on increasing crime rate against women. So as far as the research goes, see when you are researching on this topic, I would suggest you कि आप लोग बस ये ना करें कि जैसे जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है वो रिसर्च का क्या होता है कि आप लोग लेते हैं टॉपिक, गूगल करते हैं, जो आपको स्टार्टिंग के 5-6 आर्टिकल्स मिलते हैं, आप उनको ढूंढते हैं, पढ़ते हैं और आ जाते हैं. अब जब हम लोग मोस्टली रिसर्च करते हैं तो स्टार्टिंग के 5-6 आर्टिकल्स जो आते हैं वो मोस्टली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है. सो एट टाइम्स न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो होते हैं दे प्रूव टू बी क्वाइट कंक्लूसिव इन रिसर्च, मतलब उसमें आपको कुछ अच्छा सा स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं या कुछ अच्छा सा आपको कंटेंट मिल जाता है या फिर कोई एडिटोरियल सेक्शन होता है जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम
जो आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं उनमें कहीं ना कुछ कोई पॉइंट पे एक बायस्ड ओपिनियन डिस्प्ले हो ही जाता है. सो माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल विल बी दैट कि आप जब एजेंडा को रिसर्च कर रहे हैं तो एजेंडा को एज अ होल मत आप रिसर्च करिए. एजेंडा के आप अलग अलग एस्पेक्ट्स को करिए. जैसे उसका सोशल एस्पेक्ट क्या होगा, उसका लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होगा, फिर इस पर्टिकुलर एजेंडा में ऐसे क्या क्या फ्रेमवर्क हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क हैं, आप उनको ढूंढ सकते हैं. फिर क्या क्या आपके पार्ट पे आप रिकमेंडेशंस आप लाना चाहते हैं, बिकॉज आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप एक नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू को डिस्कस कर रहे हैं. So you can bring in some recommendations on your part by the end of the committee. Besides that, I understand that आप लोग MPs हैं, तो obviously आप उस टाइप के एक उन जो एक्चुअल MPs होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई यहाँ पर नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी है, तो आप लोग उनकी पर्सनालिटी को अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइब करने की पूरी कोशिश करेंगे. एंड सी दैट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो फॉर 2 days. बट I would personally suggest you that आप even though उनकी personality को अपने अंदर imbibe कर रहे हैं, but also try to focus on the aspect कि आप पूरी तरह से ना एक politician के उसमें ना आ जाए फॉर्म में. आप एक तरह से ये समझिए that it is your responsibility to deliberate upon this issue, जिससे कि people around you can learn something from you over those 2 days. So पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का वो लाने की बजाय थोड़ा थोड़ा आप एक प्रॉपर रिसर्चर की तरह, प्रॉपर एक कोई एडवोकेट की तरह या फिर कोई एक एक्टिविस्ट की तरह आप उस टॉपिक पे रिसर्च करिए एंड देन ट्राई टू ब्रिंग आउट द कंटेंट. ऑल्सो लोकसभा में नॉर्मली या राज्यसभा में एक ये ट्रेट होता है that the delegates try to use a lot of वो क्या हम लोग कहते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ, जैसे लोकसभा में कोई ना कोई एक जुमलेबाजी होती है, they try to bring in a lot of those things in the committee. So all those things are quite good and sometimes important as well in the committee. But if you feel that कि आप पूरा का पूरा 2 दिन कमिटी का सिर्फ वो जुमलेबाजी करके वो छोटे छोटे रिटोरिक्स देकर यू कैन इम्प्रेस द कमिटी और द मेंबर्स अराउंड यू, then see that is not the case, because although the delegates around you they'll be very happy, they'll hoot, बहुत शोर मचाएंगे कि अरे अरे देखो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी ने रिटोरिक दे दिया. Amardeep, can you please wait for some time if possible? Yes ma'am, sure ma'am. So rhetorics are important, but don't restrict yourself to the rhetorics itself. Rhetorics you can use in between to give some extra heat to your speech, but try to include a lot of substantive content as well. Yes, Amardeep, tell me. Amardeep, you had a doubt or a question, I think. Yes ma'am. My question is कि जैसे कि हमारा जो देश में कोई भी कानून बनता है और उस पे जब डिस्कशन होती है किसी बिल पे, तो इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट लीगैलिटीज पे सिर्फ बात नहीं होती है, उसके सामाजिकता पे भी बात होती है, उसका जो मतलब और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं. बट अभी आपने बोला कि आप एक एडवोकेट की तरह, लॉयर की तरह रिसर्च कीजिए. अब मैं जो हूँ वो साइंस का स्टूडेंट हूँ, अब मैं जो हूँ वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैं तो फिजिक्स पढ़ने वाला आदमी हूँ, तो मैं उसको सिर्फ लीगैलिटीज पे कैसे, मैं चाहता हूं कि मैं अपना डिबेट जो है, जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स होगा, जो हमारा बिट्स होगा, वो हम हिस्टोरिकल, सोशल और भी जो इम्पैक्ट है मैं उस पे रिसर्च करके आऊं. लेकिन आप जब ऐसा बोल, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूं, पिछले 10 दिनों से कर रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, इस पे मुझे थोड़ा सा लाइटन कीजिए आप. अमरदीप, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं कि मैंने क्या कहा. मैंने बहुत ही एक्सप्लिसिटली, बहुत ही क्लियर शब्दों में ये बात अभी अभी कही है कि आप लोग जब सब रिसर्च करेंगे तो उस टॉपिक का सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ उसका सोशल एस्पेक्ट, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट करिए. आप लोग एक एडवोकेट की तरह, एक एक्टिविस्ट की तरह उस रिस्पेक्ट में उसमें रिसर्च करिए. मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग सिर्फ एडवोकेट की तरह रिसर्च करिए. मैंने आई थिंक क्लियरली यहाँ पर सब लोग हैं, they've heard that I said that as an activist also, socio political legal research आप combined करिए उस टॉपिक पे. Am I right? Just a second, sorry to intervene, ma'am. Yes ma'am, now you are clear. Amardeep, excuse me, Amardeep, sorry. Amardeep, please एक बारी आप मेरे को बता दीजिए आपने किस नेम से रजिस्टर करा है, ठीक है. एक बारी मेरे से आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है, आपके डाउट क्लियर करने मेरे को. प्लीज वेरी मेरे को बता दो आप यहीं पर ही चैट में.
कि आपका आपने अपने नेम से ज्वाइन करा मीटिंग या फिर आपका अमरदीप ही नेम है? थैंक यू। ऋत्विक, इफ यू डोंट माइंड, आप जो डेलीगेट्स के पोर्टफोलियोज है मेरे सामने मत डिस्कस करना, बिकॉज while the before the committee goes on, I refrain from knowing the portfolios of नो anybody. मैम, मैं पोर्टफोलियो नहीं, बट जस्ट वांट टू नो कि अमरदीप किस नेम से उन्होंने रजिस्टर करा है, मैं ये नहीं जानना था उनका पोर्टफोलियो क्या है। ओके, Okay, okay, all right. या अमरदीप, प्लीज प्लीज लेट मी नो राइट सर हियर राइट सर नाउ। सर ऋत्विक हाँ सर हाँ बोलिए। ऋत्विक सर, हमारे देश में जो जो लॉ को इंटरप्रेट करने का जो सुप्रीम ऑफिस है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और वो केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में प्राइवेसी की बात करी है। तो मेरा ये प्राइवेसी सर सर ठीक आई करवा। कैन गिव यू माय पर्सनल डिटेल पर्सनली टू यू। प्लीज प्लीज सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर, आई विल सेंड यू। All right. Meanwhile, Rashmi, you were saying something. Yeah, Hitanshi, I just wanted to clear his doubts because उनका जो क्वेश्चन था शायद औरों का भी हो सकता है, तो मैं बस वो क्लियर करना चाहती थी कि आपकी रिसर्च सिर्फ लीगल एंगल्स तक नहीं रहेगी। डेफिनेटली एज अ लॉयर भी आप सारे एंगल्स को टच करते हैं, और हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो आप सारे ही एंगल्स को टच करके ही अपना व्यू देंगे वहाँ पे। Right. Okay. So I see some hands being raised. Yes, Bhavya. All right. Hello, ma'am. Ma'am, my question is, can you take us through a progressive state ki how the committee will go ahead? Likewise, what will happen after the opening statements and how will it end? And I have another question that usually there are in some committees there is a paper presentation or there is a combined paper making. So is that going to be the case in this committee? Okay, so Bhavya, addressing your first question, see, when we'll be starting the committee on the first day, so we'll be beginning with the opening statements by default. I am still not aware of how many delegates I have in my committee, but if in case I have 30, 40 or however number of delegates, I'll honestly be expecting that all of you make an opening statement. However, if somebody does not want to make an opening statement, we'll deal with that situation that day itself. But I'll be encouraging you all that you all make an opening statement. Post the opening statements, you all will be raising a motion. Now, when I say that you all will be raising a motion, it does not mean that if there are 30 delegates in my committee, all of them should raise a motion. When I say by all, I mean that you all should try to come to a consensus. Like if members of the ruling party, they can come to a consensus and bring in one agenda, or the best situation will be that all the members in the committee, like the entire Lok Sabha, they come to a consensus and then they bring one motion on the floor, and then there will be an informal vote, informal or formal, we'll see to that itself over there. There will be a voting on the motion. Then as and when the motion passes, we'll be discussing that motion. Again, we'll be recognizing speakers for that motion, and depending upon how much time we have for the simulation, like if we have 6 hours in one day or 4 hours in one day, accordingly we'll be discussing the motions. Normally, as far as my experience goes, I think over the period of 2 days, at max 3 or 4 motions. I haven't seen more than 4 motions being discussed. 4 is also the scenario where the number of delegates are around 30 in a committee. If there are more than 30 delegates, say there are 40 or 50, then I have seen at max 3 motions going on, right? Because over here we predict that कि ठीक है 3 या 4 5 हो जाएंगे, but जब उसमें हम लोग questions add कर देते हैं, like there are there are questions on the floor and there are doubts also, there are point of orders as well. उन सबको मिलाकर not more than 3 motions are normally possible. However, this is totally up to your hand, like the delegates in the committee. अगर वो लोग मतलब थोड़े से इधर उधर के क्वेश्चंस, इधर उधर के डाउट से रिफ्रेन करते हैं and they go as planned, then we can have more motions as well. Then addressing your second question, the paper thing. See, a presentation of paper is something which happens in the UN committee. In the Indian committee, that is the Lok Sabha, we have bills over here. ठीक है, जैसे कि आपके पार्लियामेंट में भी होता है कि आप बिल्स लेकर आ सकते हैं, बट इवन फॉर दैट बिल देयर इज दिस रूल कि आपको 10 AM से पहले मुझे इन्फॉर्म करना है और मुझे अपने बिल का हार्ड कॉपी देना है, राइट? अब बिल एक्चुअल पार्लियामेंट में बिल को लेकर जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है. अब
since people over here सब academic से हैं I think, तो इतना stringent procedure follow करना possible नहीं हो पाएगा. So the ideal rule that we keep is that if you are presenting a bill, either it's a private member bill or like in combined with some people from your ruling or opposition, whatever it is, you have to let me know before 10 a.m. right, and you have to give me a hard copy of your bill. So if, and also in that situation, let me tell you one more thing, if we are over with the motions on time, only in that case you will be allowed or given a chance to present your bill. Now normally in the parliament ऐसा होता है कि जब आप बिल लेकर आते हैं तो बिल की 3 रीडिंग्स होती हैं पहले, फिर उसके बाद और प्रोसीजर चलता है वोटिंग का, हर रीडिंग के बाद अलग वोटिंग होती है एंड ऑल दैट, राइट. बट यहाँ पर इतना ज्यादा हेक्टिक प्रोसीजर फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं होगा. सो इफ वी आर लेफ्ट हेयर विद द टाइम, सी आप अपना बिल मुझे सबमिट कर सकते हैं, आई विल गो थ्रू दैट विल डेफिनेटली बी यूटिलाइज्ड इन मार्किंग और वट एवर सिस्टम वी फॉलो. बट आपको उसको प्रेजेंट करने का टाइम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, दिस विल डिपेंड अपॉन वेदर और नॉट वी आर एबल टू फिनिश द मोशंस ऑन टाइम. If we are able to finish the motions on time, then if we have 2, 3, 4 bills in the committee, the people can present it in the committee. But voting on the bill and reading, extensive reading of the bill, I don't think so that will be possible. All right, ma'am. Is this like, are we supposed to do this on the first day itself or the second day? Like handing over the bill to me or preparing the bill? Handing over the bill. On the second day. Before Okay, 10 thank a.m. you. Yes, ma'am. Thank you so much. No problem. I was seeing some more hands being raised. Acha, haan, okay, fine. So we have Nitya again. Nitya, yes? So, ma'am, do every delegate have to give speech of 90 seconds, or it's like chance wise that if you would if you would give chance to some delegates, then they would have to give the speech, or it No, would see, whichever delegate is recognized, all the delegates will be given 90 seconds for the opening statements, right? Now, post opening statements, the speeches that will be made in the motion, the total time and the per speaker time for that speech will be determined over there itself in the committee. But most of the time it is 90 seconds only. If not 90 seconds, the time varies between 60 to 90 seconds for the motion speech. But for opening statements, I mostly keep the time as 90 seconds only, because see, 60 seconds, as I've said earlier, you'll start the speech and you'll not even know when 60 seconds are over. So when I say 90 seconds, I restrict myself to 90 seconds only. ये नहीं कि आप 90 seconds बोल के 120 seconds या उससे ज़्यादा ले रहे हैं, right? If some important point is left, बहुत ही urgent है, तो maybe I can give 10, 15 seconds, 20 seconds ऊपर, but highly उसको exceed करना is not recommended by me, because then I'll not be marking you for that extra time, right? बट मोशंस के लिए जो टाइम है वो भी नॉर्मली 60 to 90 seconds में वैरी करता है, बट दैट एग्जैक्ट टाइम विल बी डिटरमिन्ड ओवर देयर इटसेल्फ इन द कमिटी. देन वी नो द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी, द मोशन, एंड like we have all the details with us. Is it okay, Nitya? Yeah, it's okay. And second question of mine is, do we have to challenge the ruling party as as of mine? I'm given the portfolio of Congress. So do Congress have to challenge the ruling party, that is BJP, that you are not doing so and so that's why women are facing such and such difficulties? Or do we have to just give our points over that this and this how we can improve the situation of women, and this how women are facing difficulties? Okay, so Nitya, again, like this is a very common presumption that is there in the minds of the people कि अगर कोई एक opposition से है या अगर कोई एक ruling से है तो opposition को हमेशा ना ruling के against ही जाना है, ठीक है? But when I am there in me as an executive board, I have an opinion that if you are discussing a matter of national importance and which is not very controversial in nature,
तो उस केस में if opposition feels that something that the ruling party has said is something which can be deliberated upon together, वो जो कह रहे हैं वो सही है, उस पे हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, then obviously opposition can favor the same. And the same goes to the ruling party as well, whoever belongs to the member of the ruling party. If they feel that अगर जैसे यहाँ पर women safety laws है, I am sure women safety laws में इतना highly controversial बहुत ही rarely कोई point होगा जो इतना highly controversial होगा. Like अगर मैं opposition से हूँ, मैं कहती हूँ that rape laws में ऐसा ऐसा कुछ change होना चाहिए या फिर women safety के ऊपर और laws लेकर आना चाहिए, तो आई एम श्योर दैट रूलिंग पार्टी से कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं लॉज नहीं आने चाहिए या फिर वुमेन सेफ्टी बहुत ही माइनर इशू है, राइट? तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें यू नो देयर इज अ वेरी लिटिल चांस फॉर कंट्रोवर्सी. हाँ, अगर कोई एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उस पे में भी हो सकता है कि कंट्रोवर्सी रेज करी जा सकती है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कोई ऐसा सिनेरियो अभी हमने देखने को मिला हो, या फिर कोई ऐसा केस आया हो जिसमें किसी के साथ कुछ किया गया हो, वो मे बी हो सकता है दैट कुड बी अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी. बट बिसाइड्स दैट आई डोंट फील दैट दिस इशू इज अ यू नो is a very controversial topic. So you, of course, as an opposition you can support the ruling party wherever you feel that they have raised a valid point, and the ruling party can also support the opposition members if they feel that they have raised a valid point somewhere. However, you should not if your party has set some lines and they have some set some standards of their own for something, you should not definitely try to cross that, because वो थोड़ा सा एक parliamentary वो procedure में fall करेगा फिर. Okay, thank you. All right. Yes, Vansh, tell me. Vansh, do we have you here? Okay, we'll move to the next question. Kritika Sharma. Yes, ma'am. So, ma'am, I had one question. It is regarding the line you said earlier. You said that even we can have a conversation between us, like one party, like we belong to one party, and we discuss about the motions. And few motions, obviously, there would be like 30, 40 if we are not discussed prior to the meet. So, if we have discussed, and let's suppose I have raised a motion, so who will going to present that? See, approximately 20 people, somehow I convinced them to pass my motion. So who will be presenting my motion? If any other picks that motion and speaks, so the points will be gone to them. Is that so? Okay. So, Kritika, if that motion has been initially proposed by you, like there will be some lobbying time given to you. For instance, if with you there are 15 more people, and if you had proposed the motion to them and you had convinced them, then of course you can raise the motion yourself. And if along with you there are certain situations, circumstances as well, where, for instance, four people together have brought in one motion, and then they convince others to vote on the same, bring in a consensus. So when four people or more than one person has brought in a motion, then in that case, out of four of you or three of you, one of you can present the motion, and while you present the motion, see, I'll also be taking chits, right? So before I take any motion for voting, I'll also be asking you people to send a chit to me stating a motion, like stating the names of the parliamentarians as well who have raised that motion. So for instance, A, B, C, and D, these four people have raised one motion. So when you send me the chit with that motion, you have to write the names of all the four parliamentarians who have raised that motion. So irrespective of the fact whether B or C, they speak out the motion while presenting it, it does not matter. All four of them will be marked for that motion. Is that fine, Kritika? Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Thank you so much. Okay. Yes, Gia. Hi, I think I missed the thing when you said. So my question is, when we are citing facts in the committee, what sources are valid? Like, what can we say are valid? Okay. So, see, almost all the sources are valid besides the newspaper articles. But mostly, if you are in Lok Sabha and if you have to cite sources, I think I would suggest you can use PRS, PIB, MHA reports, any other ministry reports, or state commission reports, or law commission reports.
Mostly the reports of these are quite reliable and are worthy to be cited. Besides that, if you're presenting any statistics or something, because this particular topic relates to crime and all that, so I am hoping, and I think so, that you people will be referring to NCRB as well. So if you are bringing in the statistics, try to bring in the original NCRB data. Now, the data that you'll be bringing to me, if it's in hard copy, it's quite good, but I understand that it will not be possible for all of you to bring in the hard copies, because the NCRB, annual report is like a quite lengthy report. It's 300, 400 pages report. So what you can do is that you can also bring the soft copy of it, and you can highlight the relevant portion and bring it to me. But please don't bring the newspaper articles direct, like Hindu mein there was a table with the statistics, you bringing that to me. Don't do that, please. अगर आप हिंदू पढ़ के वो टेबल निकाल भी रहे हैं, तो you will notice that if you read that, supposedly there's an article in Times of India, and it has the crime rate, एक टेबल बना हुआ है. सो उसके नीचे भी एस्टेरिक्स मार्क करके ना वो लिखा होता है कि इस टेबल का सोर्स क्या है. सो इफ यू आर रेफरिंग टू दैट आर्टिकल ऑल्सो, ट्राई टू फॉलो द सोर्स ऑफ दैट टेबल. उसके नीचे एस्टेरिक्स मार्क करके लिखा होता है कि वो यहाँ से उन्होंने लिया है. तो गो एंड लोकेट दैट सोर्स एंड ब्रिंग दैट टू मी. इज दैट ओके? Yes. Okay. So, Nitya, yes. Nitya, before you, I'll just take Kushal's question because you've asked, na, so I'll just give him also chance. Yes, Yeah, Kushal. yeah. मैम मेरा ये सवाल था, जैसे कि 90 सेकंड की ओपनिंग स्टेटमेंट हमने दे दी, उसके बाद क्या एक वर्बल पीओआई लेने का हमको मौका दिया जाएगा? See, opening statements में POIs नहीं allowed होते हैं. एटलीस्ट स्पेशली मैं तो नहीं करती हूँ, ठीक है, बिकॉज ऐसे अगर आप क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप सिर्फ अपना जो आपका पार्टी लाइंस है, आपके जो पोर्टफोलियो का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या सोच है उस टॉपिक में, आप वो डिस्प्ले कर रहे हैं. अब अगर अपना उस ओपिनियन, अपने उस लाइन को क्लैरिफाई करने में, उस टॉपिक को आपका क्या सोच है उसको क्लैरिफाई करने में भी अगर आप पीओआईज पूछेंगे, तो फिर देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज एक्चुअल पीओआईज जो होते हैं देयर शुड बी इन द मोशन स्टेटमेंट्स, बिकॉज मोशंस में आप एक्चुअली उस पे डेलिब्रेट करते हो इशू पे. ओपनिंग स्टेटमेंट्स आर ओनली टू जस्ट क्लैरिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेयर योर माइंड इज सेट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. मैम दूसरी चीज ये थी कि अगर जैसे चिट के माध्यम से पूछना हो तो चिट पे एब्सोल्यूट रहेगा कि एवरेज रहेगा मैम, क्योंकि वर्बल तो है नहीं, तो अगर चिट्स के माध्यम से पूछना हो हमको, नहीं और नहीं क्योंकि मैम देखिए, जैसे अगर मोशंस लेंगे तो अब 2 दिन की कमेटी मैम आपको मॉडरेट करना है, तो आप क्वेश्चन आवर भी लेंगे, 0 आवर का भी कोशिश करेंगे, फिर 1 या 2 डिस्कशन ही हो पाएगा, इसलिए मैम. नहीं देखिए, with respect to whatever average and absolute you're asking me, I'll suggest one thing, that with respect to marking whatever questions you have, please don't ask, because मैं absolute average जो भी है, that I will decide discussing with my co-executive board members, and ये सब चीजें उन 2 दिन में ही deliberate होंगी, rather than और उसके अलावा the thing goes for a 0 hour and question hour. See, ये सब चीजें करना, आप बोलेंगे जरूर कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स ये चीज करना चाहते हैं, बट मोस्टली इफ यू सी दैट 0 hour होना ना होना, क्वेश्चन आर होना होना, दिस मोस्टली लाइज इन द हैंड्स ऑफ द डेलीगेट्स एज वेल. क्योंकि एज एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर या फिर एज अ स्पीकर, आई कैन नॉट आस्क कि आप लोग 0 hour करिए या फिर आप लोग क्वेश्चन आर करिए. आई कैन ओनली हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग दीज सेशंस. बट अगर आप लोग अपने मोशंस से ही खत्म नहीं करेंगे, अगर आप अपने मोशंस के डिबेट पे ही अटके रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, राइट? सो ये चीजें आपको 0 hour चाहिए नहीं चाहिए, ये ऑब्वियसली देखिए, आप लोग 30-40 डेलीगेट्स जितने भी हैं, यू विल हैव टू डिसाइड अमंगस्ट योरसेल्फ. बिकॉज जैसे आई थिंक अभी किसी ने पूछा था बिल के रिगार्डिंग भी, राइट? तो अगर बिल भी आपको अपना प्रेजेंट करना है, मोशंस भी आपको अगर 2-3 चाहिए, 0 hour क्वेश्चन आर, 2 दिन के सेशंस में ऑल ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल, right? So whatever you want to have, you will have to be a little smart about it, कि अगर आप क्वेश्चन आर और 0 hour दोनों चाहते हैं, तो देखिए सेकेंड डे पे तो मोस्टली इतना सब कुछ करने का टाइम मिल ही नहीं पाता है, बिकॉज सेकेंड डे पे यू ऑल्सो हैव योर वैलिडिटरी सेरेमनी एज वेल, राइट? सो बिकॉज ऑफ द वैलिडिटरी सेरेमनी द टाइम इज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड. फिर अगर मैं डेलीगेट्स को, जैसे आई नॉर्मली फॉलो दिस रूल, मैं तो ये बोलती हूँ दैट इफ यू डोंट वांट टू हैव लंच, इट्स ओके, यू सिट इन द कमिटी एंड हैव अ डिबेट. क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप लोग 1-2 दिन नहीं भी खाना खाएंगे? But then obviously that is my point of view, not everybody wants to follow that, right? So इतने सब सेशंस करने का टाइम नहीं मिल पाता, तो आई एम नॉट दैट वन पर्सन हु विल गिव यू फॉल्स होप कि चलिए हम लोग क्वेश्चन आर भी रख लेंगे या 0 hour भी रख लेंगे. सो दैट नॉर्मली डज नॉट हैपन.
Is that okay, Kushal? जी मैम, ओके। Okay. Yes, Nitya. Ma'am, can you please tell the reporting time and when the event is going to end? Okay, so Nitya, regarding the reporting time and all, I honestly don't have the idea for this. You will have to consult the organizing team members. They'll be releasing an itinerary, I think, for the same. And as per that, you will have to report. But yes, if the time is 9 o'clock or 8:30, please make sure that you are there by 9 o'clock or 8:30, because उसमें लिखा रहता है 9 o'clock, but then I see delegates they're coming by 9:30 आराम से breakfast करके आ रहे हैं and all that. So ये छोटी छोटी चीजों में ना आप लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, and then you say कि मैम we did not get the time to speak, we did not get the time to ask questions, and as a result at the end we as executive board members have to hurry so that everybody can ask question and everybody can give speech. तो हम लोग को कुछ कुछ जगह पे ना चीजें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ जाती हैं. सो टाइम आप ओसी मेंबर से पूछिए, बट जो भी टाइम हो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एट दैट टाइम इन द कमिटी. ओके, बाय द वे मेट्रो स्टेशन से ऑटो मिल जाएगा ना कॉलेज तक आने के लिए? Nitya, regarding that, you can contact me or Ritik. We'll clear all your doubts. ओके, थैंक यू. Yeah. Okay. Do we have any more questions? Excuse me, ma'am. We also have some questions in the chat box if you can answer them as well. Okay. Okay, so is it mandatory to speak? See, it is definitely not mandatory to speak, but if you're coming in the committee for 2 days and you've paid as well for the committee, so it is expected of you to speak, because otherwise, I understand that if somebody is a first timer, not everybody is quite comfortable making a speech that well. But over here in my committee, you don't have to be worried about the fact how you speak. Of course ऐसा भी नहीं हो that आप लोग entire time अपना paper को refer कर रहे हैं, because if you're researching beforehand itself, you will be having some speech prepared. So when you're giving the speech, try not to refer the paper entire refer to the paper entire time. Like कुछ कुछ points आप देख सकते हैं and all that, but पूरा paper से पढ़ के speech मत दीजिए. अगर आप ऐसा करते भी हो तो of course I cannot stop you from doing that, but yes, definitely that will be noted. बाकी it is not mandatory to speak, but it will be appreciated and it will be encouraged if you speak. Okay, there's a question when we will be having our 0 hour question hour, and how many interjections are allowed per speaker, and are we allowed to follow up? Okay, so first of all, when we will be having our 0 hour question hour, this will depend totally upon the productivity of our first day. If our first day is quite productive, the discussion is has happened up to the mark, then I normally have a 0 hour or a question hour on the second day of the committee. Then how many interjections are allowed per speaker? There as such there is no limit on the same, but again this totally depends upon how our session is going on. If we have ample of time left, then I'll allow, मतलब see the number of interjections जितना भी है, ये मैं यहाँ पर ना आपको एक सेट नंबर नहीं बता सकती कि 2 अलाउड होंगे 3 अलाउड होंगे. दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कितना हमारे पास टाइम है, कैसे हमारे स्पीचेस जा रहे हैं, कितने डेलीगेट्स हैं कमेटी में, ये सब उस पर डिपेंड करता है. एंड आर वी अलाउड टू फॉलो अप अगेन? Yeah, if we have time and if the committee is going well, then you will be allowed one follow up. But follow up does not mean that आपको एक follow up दिया फिर सामने वाले से फिर किसी ने कुछ comment pass करा, then you again say something. So in that case, follow up means it is only one follow up. However, in one circumstance, irrespective की committee में कितना time है नहीं है, a follow up will be allowed to the delegate, is when some defamatory statement or some statement which has been injurious to the reputation of that parliamentarian as not personal but the portfolio parliamentarian is affected. In that case you will be given a follow up. Am I clear, Vansh? I think Vansh had this question. Vansh, is it okay? Okay, all right. Yes, Alvinkar. Am I pronouncing it right? Alvinkar, you had a question?
Yes, ma'am. Yes. So like पार्लियामेंट हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मेन तो हमारा लाइक मोटिव तो यही रहता है कि हम किसी डिबेट या किसी सोशल इशू पे हम कोई तरह का सॉल्यूशन निकाले, कोई सॉल्यूशन एक कॉमन एग्री करें। बट मैम लाइक केमिस्ट्री जो होती है लाइक दो पार्टीज के बीच में, अपोजिशन के बीच में, वैसा नहीं हो पाता। तो लाइक आपके प्रायर एक्सपीरियंस से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर? इज इट विल इट बी अ डिबेट और विल इट बी अ डिस्कशन ऑन लाइक टू फाइंड सम सॉल्यूशन ऑन दैट टॉपिक? I did not understand the part where you asked कि हम आपके experience से क्या expect कर सकते हैं. Like Can you, in like if you would have attended Alvinki, can you be a little louder, please, if possible? am I audible? Yes, you're audible now. So ma'am like आपकी प्रायर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आई एम आस्किंग लाइक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पर? विल इट बी अ डिबेट कि या फिर आर वी लाइक मोटिवेटिंगली डिस्कसिंग लाइक कोई सॉल्यूशन निकाल सके हम उस प्रॉब्लम के ऊपर? See, normally मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि जब डेलीगेट्स 2 दिन कमेटी में आते हैं तो वो Yes, sir. सोल्यूशन से ज्यादा ना इस चीज में फोकस करते हैं कि हम यहाँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट आप लोग सब आए हैं एज डेलीगेट्स, तो समवेयर देयर विल दिस बी दिस माइंडसेट इन योर माइंड कि आपको अच्छे से परफॉर्म करना है सो दैट यू कैन विन. But my Yes, sir. experience has been that there are always some delegates in the committee, मतलब जिनका मोटिव सिर्फ ये रहता है that we will win. They only want to win. So coming with that mindset only in my committee कि हमें सिर्फ जीतना ही है will not help you personally. मतलब obviously मेरे माइंड में इस चीज को लेकर कोई बायस नहीं है, आपको जैसे करना आप कर सकते हैं, राइट? बिकॉज आई विल ओनली बी हेल्पिंग आउट कि आप ऐसे करिए या ऐसा मत करिए. इन माई माइंड दिस विल बी क्रिएटिंग नो बायस. बट अगर आप कमेटी में आते हैं सिर्फ इस माइंडसेट से कि हम सिर्फ आएंगे, सिर्फ हम जीतने के लिए आए हैं, हमें सिर्फ वो कैश प्राइज चाहिए, दिस विल नॉट हेल्प यू पर्सनली. बिकॉज व्हेन यू कम विद दिस माइंडसेट ना, आप एक चीजें भूल जाते हैं कि क्वालिटी डिबेट और डिस्कशन क्या चीज होती है. क्योंकि आप सिर्फ आएंगे, अपना स्पीच देंगे, क्योंकि आपको बस एक मार्किंग सिस्टम में अपने आप को ऊपर करना है, तो यू विल आस्क क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, राइट? बट अगर आप genuinely, if you want to learn something from the debate, if you are coming here for a good experience, then Yes, sir. just besides giving a speech, when you are asked to give a speech, do one thing, that be very alert while you're in the committee. सिर्फ अपना स्पीच देकर बैठ मत जाइए. जब दूसरा डेलीगेट स्पीच दे रहा है तो आप उसकी स्पीच को भी सुनिए. ट्राई टू मेक आउट कि कहां पर उसकी स्पीच में लूप होल था. आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट डेलीगेट एंड डोंट आस्क क्वेश्चन ओनली फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. ट्राई टू आस्क अ वेरी प्रोडक्टिव क्वेश्चन. बिकॉज आई हैव सीन दैट डेलीगेट्स क्या करते हैं ना, पहले 5-6 लाइन का एक स्पीच दे देंगे और उसके बाद उससे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट? सो एक आइडियल क्वेश्चन वो होता है which is quite short and crisp and to the point. And the same goes for the answer also. If some delegate has asked you a question based on your speech, so don't give an answer which is like 10-15 lines jitna bada. The best answer is which is very short and has answered the person's question point wise. आप जितना ज्यादा अपनी स्पीच को पॉइंट वाइज रखेंगे, उसको डिवाइड करके रखेंगे, दैट विल बी अ वेरी आइडियल स्पीच. क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको पैराग्राफ्स में, लंबे लंबे पैराग्राफ्स में रखेंगे ना, आप 90 सेकेंड्स में, क्योंकि वो सब चीजें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, राइट? सो जितने ज्यादा आपके पास पॉइंट वाइज होगा, उतने ज्यादा आप इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे. एंड एज फार एज द सोल्यूशन थिंग गोज, सी आई विल पर्सनली सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग वैसे जो चाहें करना चाहें करिए, बट by the end of second day try to have one motion या फिर try to have one particular session which is entirely based on solutions and recommendations that you have for this particular agenda. Because unless and until you go from here without having any conclusive research or without having any suggestive reforms, the entire 2 days will be simply a waste of time for you all, right? क्योंकि अगर आप सिर्फ issues पे deliberate कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास solution ना हो उस particular issue के लिए, right? Yes, so I'm like this meeting will be extended for 2 days. Meeting Means this deliberation will be held on 2 days, like yes, same. yes. Okay. Do we have any more questions? Jia, yes.
In the background guide, it's written that there is substantive intervention by the executive board. So, what exactly is that? Honestly, I'll have to go through it once, and only then I'll be able to clarify this thing, because I haven't went through the background guide entirely, Abhi. So, Jia, if it's okay, can I go through it and then answer your question? Yes, of course. Yes. Yes, Kritika. Yes, ma'am. I had one question. It's regarding that you spoke like if you are taking like one. Okay, let me rephrase. Are you going to take all the motions together? Like, will you be hearing all the chits or speaking like that, and then you will give all of us to have a speech on a particular motion, or you will be preceding one motion and then the speech regarding it, and then the other motion. Okay. So, Kritika, the thing is that we will be having one motion for each session. So before each session commences, before that only we'll have a voting on the motion, and whichever motion passes, the entire session, that one particular session will be dedicated to that particular motion, and all the delegates during that session will have to speak on that motion. Now, once that one particular session on that motion ends, again we'll begin with another session, and before another session begins, again we'll have a voting on the motions again. Is that all right? Yeah, ma'am. Okay, thank you. Okay. Okay, we have one question. Uh, okay, so Avdit has a question. First of all, can I know how many first timers are here in this committee? Uh, okay, so there are some. Okay, so for the first timers, my personal suggestion is that first of all, when you're researching, I understand that not all of you might be from some of you might be from undergraduation courses also. Is there anybody who's from school, or all of you are college going students? Okay, so this topic is somewhat legally inclined topic, right? So since I understand that many of you might not be law students and might be having a simple undergraduation. So my personal suggestion is that when you're researching into the topic, don't just restrict yourself to the very basics of the topic, right? Try to dig deep into the topic. Like if we are talking about the crime rate, try to find out the reasons behind the increase in the crime rate. Then when we are talking about the crime rate, if I just give a vague statement, अगर मैं कमेटी में सिर्फ खड़े होकर एक ऐसा वेग स्टेटमेंट पास कर देती हूँ कि फलाना फलाना स्टेट में क्राइम जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, राइट, एंड इफ फॉर इंस्टेंस सम अदर पर्सन आस्क यू, आप कैसे कह सकते हो कि इस स्टेट में जो ऐसे क्राइम रेट बढ़ रहा है, देन what my contention is that if you're giving any such statement, try to back it up with some data or a concrete evidence, right? So अगर मैं कहती हूँ कि फॉर इंस्टेंस राजस्थान में क्राइम रेट बढ़ रहा है, या फिर राजस्थान में XYZ तरह का जो क्राइम है अगेंस्ट वुमेन वो बढ़ रहा है, तो ट्राई टू फाइंड आउट द डेटा और द स्टेटिस्टिक्स बिहाइंड इट विच शो दैट हाँ एक्चुअली द क्राइम अगेंस्ट वुमेन या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन सो एंड सो कैटेगरी is increasing in this particular state. Otherwise whatever statement you pass is like just a vague statement, right? आप में और नॉर्मल देश के लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा जो नॉर्मल बैठ के ऐसे डिस्कशन करते हैं. So if you're here, try to back up your statements with some concrete evidence or proof or some report that has been brought in. This is my first suggestion. Secondly, my suggestion is that you'll obviously be asking questions in the committee. So frame your questions mindfully. Don't ask questions just for the sake of asking it, yeah, for just for making a place for yourself in the committee. Don't just say anything, because honestly, if you feel that there is one delegate who is speaking 10 times and there is one delegate who is speaking 5 times, don't think that just because the other delegate is speaking 10 times, that person will be given more importance, or that person will be marked more as compared to you. If you are giving if you're speaking 5 times and the quality of those 5 times is much better than those 10 times, then definitely you will be marked in a better manner as compared to that other person, right? So try to focus on quality more than quantity. If you're giving a 90-second speech, try to make it as substantive as possible. Even if you're giving a 60-second speech and you're not able to utilize your 90 seconds, but those 60 seconds have been utilized quite well,
then even that is not a problem. Is that okay? Okay, so as far as the reports go, if you're not able to produce the hard copy to me, then the solution for this is that in between the session, don't approach the executive board and say that कि मैम देखिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट है ये देखिए. What you can do is that once the session ends, first solution is this, that once the session ends, you can come to me and show the XYZ report to me in your laptops or mobile phones. And if you cannot wait until the session ends, what you can do is that you can take up my email IDs and you can send the highlighted portion of that report in which the source and the name of that report and the year of that report is clearly mentioned. You can mail that particular portion to me. Is that fine? Okay. Yes, Nitya. Ma'am, do we have to tell the sources from which we have gathered the data? Okay. So, Nitya, normally when you're giving a speech, unless and until it is a very, very important data that you are putting forth in the committee, you don't normally have to, mention the source of your data or information while making a speech, unless and until it is a very crucial data. But yes, you need to keep the source of the data or the information in hand with you, because if the another delegate, he or she asks a question from you after your speech ends, then you will be needing that source of the data, right? Or even if the executive board asks you to present that source, then also you will be needing that. And if I'm presenting any newspaper source, then that will not be valid. No, not in a newspaper source. Okay. Also, Thank in a you. newspaper, normally a newspaper article is not citable, but there's one thing that normally sometimes there is an editorial section in the newspaper. If you feel that the editorial section in the newspaper that you are using, if that editorial is written by a very eminent person, for instance, hypothetically this is a situation that XYZ न्यूज़पेपर में राहुल गांधी जी का एक एडिटोरियल कॉलम आया है, राइट? सो in that situation you can use that editorial column to ask question or to cite some information said by him. Is that fine? Yeah, all right. But it has to be an extraordinary situation. Like you understand कि राहुल गांधी जी का एक एडिटोरियल कॉलम था तो आपने वो साइट कर दिया, या फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ही कोई ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट है जो कहीं पर न्यूज़पेपर में स्टेटेड है, इवन दैट यू कैन यूज. बट बिसाइड्स दैट जो डेटा एंड इंफॉर्मेशन है दैट इज यूज्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर, don't use that. All right. And if you're using that, then try to find out a strong backing of that information as well. Yes, Gia. And also, like, if we are saying that this particular parliamentarian said something controversial, so for that also we cannot like cite the newspaper articles that here it is written that he said this particular thing. See, for that only I just said that if there is some in a newspaper, for instance, there is written that on so and so date and at so and so platform honorable prime minister made a statement, of course that you can use, right? But ye bhi you'll have to see that which newspaper you are quoting, because ऐसे बहुत सारे local regional newspapers होते हैं जिसमें वो कुछ भी बनाकर लिख देते हैं कई बार. So even in that case you have to make sure that it's a reliable newspaper, not just some XYZ local or regional newspaper. Is that okay? Yes. Yeah, so we can show the news from the Hindu or the Times of India that this particular thing was happened to this particular women or society. Is it so? Okay, so if you have to show me some incident that has happened, so in that case, there is not much available choice for you people to find out the actual original source of that complaint or incident. So in that case, only in extraordinary circumstances you can cite the newspaper. But if that particular incident or if that particular offense or crime has been committed, and if there is any other complaint of which it is available on the online platform, for instance, a copy of the complaint is available somewhere, or there is a copy of the normally a copy of FIR is not available online, but I'm just saying that if you get a hand of it, in that situation you can show it to me.
or for instance, if that particular crime, it was a case was filed for that particular crime, so you can even show me the name of the case, like XYZ versus the state, or something like that. Is it okay? Yeah, I got it. Yeah. Do we have any more questions? um all right, Rashmi, do you have anything to say? Not particularly, as we have already covered all the important things. If they have any questions, we can answer them. Okay, so do we have any more questions? I'll just check the chat box itself if there is any. Okay, so there are no more questions, I guess. So I think we are good to go. The only last thing is that there's no actually any last thing to say. We'll see you for the 2 days. If you have any doubts or anything, you can drop an email. I think our email IDs are available in the background guides as well. You can drop an email to us, or if there's something very urgent, you can connect to us via the OC members. I think Ritvik and Devesh itself, these people know, so you can connect to us via them as well if it's very important. Besides that, we'll see you on those 2 days, and all the very best for the conference. See you. So are we good to go, OC members? Thank you so much. Thank you all of you. Yes. Tanshi and Rashmi ma'am, thank you very much for joining in, and you are good to go. Thank you all of you. Have a Thank good you, day. guys. All the Thank best. you. Bye bye. For the participants, itinerary and other doubts. First of all, itinerary will be released either today or by the end of tomorrow. And other than that, if you have any doubts regarding the venue, how to reach there, anything like that, just contact me or Ritvik. We'll clear all your doubts. And this meeting is obviously over. You may all leave now. Thank you.